Let's complete the soldering part. For more information regarding the circuit diagram and other info, please visit our website ratnasrovolab.com. In this way we can control servo motor without microcontroller, simply just using 555 timer IC. तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब कर दो।